कम इन अनदर वीडियो ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट 5 का जो बी पार्ट है शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हमने IC 7495 का एंड 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले का लास्ट लेक्चर में डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 5 का जो ए पार्ट है दैट इज़ काउंटर्स, तो वो स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो यूनिट 5 का ए पार्ट जो है वो काउंटर्स है, जिसमें कि हमें पहले इंट्रोडक्शन लेना है व्हाट इज बाय काउंटर, ठीक है। देन टाइप्स ऑफ काउंटर, सो असिंक्रोनस काउंटर इज वन ऑफ द टाइप ऑफ काउंटर। देन सम टर्म्स रिलेटेड टू द काउंटर, देन वी हैव टू स्टडी द IC 7493। देन second type of counter is the synchronous counter, so it is designed by using a toggle flip flop, T flip flop. And then after that we study the IC 7490 and 92. So that is the overall syllabus of this counter part. Then first we start with the introduction of a counter. So the most wide application of flip flop is counter and register. तो जैसे आपने देखा कि फोर्थ यूनिट में flip flop is a sequential circuit. So for building the counters and shift register, so in that the main component will be a flip flop or the main circuit will be a flip flop. So the flip flop is the basic element of sequential logic system. Using flip flop and combinational circuit, any sequential system can be designed. तो इसी तरह से flip flop and combinational circuit that consist of logic gates. So by combination of these two elements, any sequential system can be designed. So counter is the most useful and versatile subsystem of digital branch. So here counters is going to count the number of clock pulses applied to it, ठीक है। तो काउंटर जो है वो जितनी क्लॉक पल्सेस उसको हम अप्लाई करेंगे उसको वो काउंट करेगा, ओके। सो बेसिकली क्लॉक इज़ द टाइमिंग पैरामीटर वी इंट्रोड्यूस इन फ्लिप फ्लॉप। तो जिस तरह से हमें पता है कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक अप्लाई करना कंपलसरी है, ठीक है। सो देयरफॉर क्लॉक पल्सेस ऑकर एट रेगुलर टाइम इंटरवल। तो क्लॉक पल्सेस जो रेगुलर टाइम इंटरवल में एज ए इनपुट के लिए यहाँ पे वर्क करेगी, ठीक है। सो दैट काउंटर कैन बी यूज टू मेजर द time or frequency, okay. So that is the counter. So the types of counters are, there are two types of counter. So counter can be divided into the two type. First one is the asynchronous counter, it is also called as a serial counter. Second type will be the synchronous counter, which is also called as a parallel counter, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कंपैरिजन दिया है, asynchronous counter with the synchronous counter. सो asynchronous काउंटर इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड इन ऑपरेशन। तो इसका जो वर्किंग है, ठीक है, वो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है asynchronous काउंटर का। बट इन केस ऑफ synchronous काउंटर इट इज़ कॉम्प्लेक्स, ओके। सेकंड इज हैज़ अ स्पीड लिमिटेशन, asynchronous काउंटर को स्पीड लिमिटेशन से synchronous काउंटर स्पीड इज़ मोर देन द asynchronous काउंटर। थर्ड, नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय प्रीवियस फ्लिप फ्लॉप, मीन्स यहाँ पे कैस्केडिंग किया गया है सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। इन सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप ईच फ्लिप फ्लॉप इज ट्रिगर्ड बाय क्लॉक इन सिंक्रोनाइजेशन। तो यहाँ पे एक कॉमन क्लॉक यूज़ होगा सभी फ्लिप फ्लॉप के लिए सिंक्रोनस काउंटर में। नेक्स्ट इज सेटिंग अप टाइम इज मोर, सेटिंग टाइम विल बी अ लेस इन केस ऑफ सिंक्रोनस काउंटर. So that is the comparison between a synchronous and synchronous counter. Then we'll study in detail about this asynchronous and synchronous counter. Again, this synchronous and asynchronous counter is subdivided into the following group. First one is the regular counter, second is truncated counter, third is sequential counter, and fourth one is the non-sequential counter. So regular counter, for building of that counter, flip flops are used. So there is a direction relation between number of flip flop used and the number of states of the counter.
ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर की स्टेट्स भी होती है एंड नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप दोनों में रिलेशन है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो इस तरह से कैपिटल N इज इक्वल टू 2 m। सो वेयर n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ स्टेट्स and number of flip flops are m. Okay, so m is the number of flip flop and this n is the number of states, so there is a relation in between that. So n is equal to 2 raised to m, so that is the formula. So we'll consider one more variable n, where n is the number of actual state of the counter. So therefore small n is equal to capital N. Okay, so this n is nothing but the actual states of the counter. So we can say that for flip flop R3, okay, so 2 raised to 3 is equal to 8, where this m is nothing but the number of flip flop. So we are putting the value of m, so 2 raised to 3 are 8, so n is equal to 8, means this number of actual states will be the 8 in the counter. Second one is the truncated counter. So in this type of counter, number of actual states are always less than the number of states given by equation n is less than capital N. So here suppose flip flops are 3, so n is equal to 2 raised to m is equal to 8, but n is less than 8, मीन जो एक्चुअल स्टेट्स होंगे वो आपके लेस देन 8 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फ्लिप फ्लॉप तो 3 यहाँ पे, बट टोटल स्टेट्स आर 8, बट एक्चुअल वर्किंग जो स्टेट्स रहेंगे काउंटर के, इट इज़ लेस देन दिस नंबर 8 बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला n इज लेस देन n. थर्ड वन इज द सिक्वेंशियल काउंटर. एज द नेम सजेस्ट स्टेट्स ऑफ काउंटर आर सिक्वेंशियल, ठीक है, मीन्स सीरियली ये काउंट करेगा, जस्ट लाइक 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो that counter is called as a sequential counter. And fourth type will be the non-sequential counter. So sequential or states of counter is not sequential but irregular. Okay, तो यहाँ पे नॉन सीक्वेंस मीन्स सिक्वेंशियली ये काउंट नहीं करेगा, लाइक 0 3 9 8 2 1 इन zigzag fashion. Okay, so that is called as a non-sequential counter. So these are the types and subtypes of a counter system. Then we start with the first type, that is asynchronous counter. So here 3 flip flops are used, A, B, C, and these are the T flip flop. So we have already studied the T flip flop, that is the toggle flip flop, in unit number 4. So it has only one input, so therefore VCC is the input given to this flip flop A, flip flop B and flip flop C, that is T. And normally the clock in is given to the only one flip flop, that is flip flop C. Here clock is given as a input to only this C flip flop. Next observation will be if you want the end state less than n, you want to stop the counter in between and restart from 0. So for that purpose the reset logic is used at the bottom. So it is optional and it is a combinational circuit, means it consists of logic gates. And fourth observation is this Q bar or Q of previous flip flop is given as a clock to the next flip flop, ठीक है। तो यहाँ पे जो आउटपुट है फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है, दिस QB QC will be given as a input to the next flip flop, so that will work as a clock simply, ठीक है। So that is the fourth observation, means one flip flop drives the another. Okay, तो यहाँ पे एक फ्लिप फ्लॉप दूसरे फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव कर रहा है, दूसरा फ्लिप फ्लॉप तीसरे फ्लिप फ्लॉप को ड्राइव कर रहा है. इन दैट फैशन इट विल वर्क. So therefore it is called as a ripple counter. So the next point will be the design of 3-bit ripple counter. Okay, so in that flip flop negative edge trigger flip flop is used here. Okay, output is taken from Q, cascaded outputs are Q. So these are the observations for this 3-bit ripple counter. Then we have to calculate the number of states. So formula is n is equal to 2 raised to m. Okay, where m is nothing but the number of flip flops. So here
3-bit triple counter we have to design. So 3 flip-flops are used, 2 raised to 3. Total 8 number of states are in the truth table. Okay, so it is a 8 state flip-flop. So take the 3 flip-flop. Okay, that is a T flip-flop, and we know that T flip-flop has only one input, which is connected to the VCC. देन अप्लाई द क्लॉक इन टू द वन फ्लिप फ्लॉप. जिस तरह से हमने 3-bit ट्रिपल काउंटर अभी स्टडी किया, जिसमें एक ही क्लॉक रहेगा एक फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप को. ओके, एंड लास्ट फ्लिप फ्लॉप बिकम्स द MSB. ठीक है, तो लास्ट जो फ्लिप फ्लॉप रहेगा, सपोज ABC फ्लिप फ्लॉप हम लेते हैं. ठीक है, सो दैट C विल बी द MSB एंड A विल बी द LSB. ठीक है, and the output of Q of one flip flop is given to the next flip flop. ठीक है, तो जिस तरह से हमने देखा कि कैस्केडिंग में वर्क करता है रिपल काउंटर, तो जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट रहेगा वो एज अ क्लॉक सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए वर्क करेगा लाइक दैट. ओके, सो दीज आर द स्टेप्स फॉर डिज़ाइनिंग 3-bit ट्रिपल काउंटर. तो यहाँ पे हमने पहले स्टेट्स कैलकुलेट की. ओके, देन उसके बाद क्लॉक हम एक ही फ्लिप फ्लॉप में इनपुट करेंगे, and then all the flip flops are work in the cascaded fashion. Then we'll see the actual design. So here is the design of 3-bit triple counter. So here T flip flop is used. First is TA, second is B flip flop TB as the input, third flip flop will be the C, TC will be as the input, which is VCC. Okay, and the output of first flip flop, that is QA, will be work as a clock for second flip flop. Output QB for second flip flop will be work as a clock for the third flip flop, as well as the output is taken from QA, QB and QC because it is a 3-bit ripple counter. Okay, so the first is QA, QB and QC. This is the MSB bit at the QC, and at the QA it is a LSB, and the क्लॉक इज़ गिवन टू ओनली वन फ्लिप फ्लॉप विच इज़ गिवन टू द ए फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, तो क्लॉक हम एक ही फ्लिप फ्लॉप में इंसर्ट करेंगे. ठीक है, आफ्टर दैट जो आउटपुट रहेगा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का, वही क्लॉक का काम करेगा सेकंड फ्लिप फ्लॉप के लिए और आउटपुट का भी. ठीक है, तो इस तरह से ये 3-bit ट्रिपल काउंटर का डिज़ाइन है. देन विल सी द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस 3-bit ट्रिपल काउंटर. So here is the truth table. So there are the states of counter. So QA, QB and QC are the 3 flip-flops outputs, and its decimal equivalent is given. So first all the flip-flop output will be 0, so it will be a 0 in decimal. Then after that 0 0 1, so that will be a first state. Then 0 1 0, that is second. 0 1 1 like third. Okay, and up to the second 7. Okay, because 2 raised to 3 are the 8, so their total are 8 states are in this truth table. Okay, so at first all the flip flop will be a reset, so that's why this A B C, that is output of flip flop A, B and C will be 0. Then first clock will be applied, then at that time the output A will be shifted to 1, and remaining B and C has a 0, so the output is CBA is equal to 0 0 1. That will be a first state like that. When the second clock pulse will be applied, so at that time this output will be toggled from 0 to 1. Okay, and that will be a second stage like that. तो इसी तरह से जैसे हम क्लॉक अप्लाई करते जाएंगे, दैट स्टेट विल बी चेंज. सो दैट इज द डिज़ाइन ऑफ दिस 3-bit ट्रिपल काउंटर. नेक्स्ट पॉइंट विल बी द सम टर्म्स रिलेटेड टू काउंटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो कुछ टर्म्स हमें काउंटर डिज़ाइन के लिए यूज़ होंगे, तो उसका हम अभी यहाँ पे स्टडी करेंगे. तो सबसे फर्स्ट टर्म है जो है स्टेट डायग्राम है. ठीक है, तो स्टेट डायग्राम इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स ऑफ काउंटर. ठीक है, तो स्टेट डायग्राम क्या होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है स्टेट्स का, कितने स्टेट में काउंटर वर्क करेगा. ठीक है, तो उसको स्टेट डायग्राम कहा जाता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल 3-bit बाइनरी रिपल अप काउंटर स्टेट डायग्राम विल बी गिवन हियर. ठीक है, तो यहाँ पे 3-bit बाइनरी जो रिपल अप काउंटर है,
बिकॉज काउंटर आर टू टाइप्स, अप एंड डाउन काउंटर, ठीक है। तो ये अप काउंटर का यहाँ पे डिज़ाइन दिया है। सो वी नो दैट फॉर 3 बिट वी हैव द 2 raised to 3, so that is total 8 states are there, okay, n is equal to 2 raised to m and m is nothing but the 3, ठीक है। तो टोटल 8 स्टेट्स यहाँ पे आएंगी। सो 0 1 2 3, ओके, 4th 5 6 7 and after that it will be a ripple counter, so again it will give goes to the 0, ठीक है। so this arrow shows the flow up counter, ठीक है। so arrow is pointed, so it will be a up counter, ठीक है। 0 1 2 3 like that, so it will be up counter. It has total 8 states starting from 0 to 7, so these are the states, okay। तो ये सर्कल में जो नंबर है ये स्टेट है, ठीक है। तो ये अब काउंटर का डिज़ाइन हो गया, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन विल बी द डाउन काउंटर, मीन्स अपोजिट, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 7 to 6, then 5, then 4 3 2, then 1, then 0, again 7, so that will be a down counter, okay। and figure 9.4 will be the design of or states of up counter, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे अप एंड डाउन काउंटर का स्टेट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। Next term will be the module n counter, that is modulus. So it is desired to have a module n, so mod minus n counter, so the number of flip flop required is determined by the formula n is equal to less than or equal to 2 raised to m, where this small m is nothing but the number of flip flop. So suppose we have m is equal to 4, means हमें हमारे पास अगर 4 flip flops है, so this n is nothing but the 2 raised to 4, okay, and 2 raised to 4 is 16, so this n is nothing but the 16, but if we require only 10 state, ठीक है, आउट ऑफ 16, तो यहाँ पे टोटल जो स्टेट्स है 2 raised to 4 फार्मूला से हमने कैलकुलेट किया है, तो टोटल 16 स्टेट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, फॉर द काउंटर डिज़ाइन, बट उसमें से सिर्फ 10 स्टेट्स यहाँ पे यूज़ हो रही है, यूज़फुल है, देन इट इज़ कॉल्ड एज अ मॉडुलस 10, ठीक है। इन शॉर्ट इट इज़ मॉड 10 काउंटर, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 16 स्टेट्स यूज़ हो रही है 2 raised to 4, बट उसमें से सिर्फ 10 स्टेट जो है वो यूज़ हो रही है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मोड 10 काउंटर, बट द रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप्स आर 4, बट डिज़ाइन करने के लिए हमें 4 फ्लिप फ्लॉप्स लगेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ मोड 10 काउंटर। सो मोड n कैन बी अचीव बाय रीसेटिंग द फ्लिप फ्लॉप, दिस शुड बी डन एट द एंड स्टेट, सो इन मोड 10 काउंटर विल बी काउंट फ्रॉम 0 to 9, तो मोड 10 काउंटर में जो काउंटिंग होगा वो 0 to 9 होगा, ओके, एंड द 10 स्टेट विल बी अ रीसेट बैक, एंड जो 10 स्टेट होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वापस रीसेट होके ये 0 पे आ जाएगा, ठीक है। सो दिस मोड 10 काउंटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिकेड काउंटर, ठीक है। तो मोड 10 काउंटर को जो है वो डिकेड काउंटर भी कहा जाता है, ठीक है। So this is the formula which is meant to calculate the number of states for this module n counter. Then we design the mode 3 ripple counter, that is a asynchronous counter. So we start with the solution, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेट डायग्राम हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। सो नंबर ऑफ स्टेट जो यहाँ पे 3 दिए, 0 1 and 2, ओके, लाइक दैट। तो यहाँ पे टोटल 3 स्टेट्स है, 0 1 and 2, so it will be a up counter, so arrow will be from 0 to 1, then 1 to 2, and then it will again reset from to the 0 2 to 0. So the number of actual states are n is equal to 3, so we use the formula n is less than n is equal to 2 raised to m. Here states are 3, ठीक है, small n is nothing but the states, so 3 less than or equal to 2 raised to m, okay, and this 2 raised to m is nothing but the so we get the value of m as a 2. So the 2 flip flops are required to design this 3 bit counter, okay।
तो इस फॉर्मूला से हम इजीली नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे निकाल सकते हैं। सो यर फ्लिप फ्लॉप यूज शुड हैव अ क्लियर टर्मिनल फॉर रीसेटिंग और क्लियरिंग। तो यहाँ पे रीसेट टर्मिनल यूज़ होगा, ठीक है। देन रीसेट लॉजिक सर्किट इज रिक्वायर्ड टू टर्मिनेट द काउंट आफ्टर 2, ठीक है। तो जैसे ही 2 तक काउंटिंग होगा उसके बाद ये वापस रीसेट होगा 0 में। तो इसके लिए यहाँ पे एक कॉम्बिनेशनल सर्किट यूज़ होगा, ओके। सो द 2 फ्लिप फ्लॉप्स आर यूज, सो देयरफॉर 2 आर 4, सो देयर आर 4 कंडीशंस इन द ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप जो है वो कैलकुलेट किए। हमें यहाँ पे स्टेट्स दिए, मोड 3 काउंटर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेट्स जो है 3 है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके जो है फ्लिप फ्लॉप्स यहाँ पे निकाले, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप रिक्वायर फॉर डिज़ाइन दिस काउंटर। देन आफ्टर दैट फ्रॉम दिस नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप विल इजीली गेट द नंबर ऑफ स्टेट्स इन द ट्रुथ टेबल, ओके। तो यहाँ पे 2 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं हम, QA एंड QB इज़ द आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप। सो फर्स्ट इज 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। सो देर आर 4 states are there from 0 to 3, okay। so 0 1 2 are the valid state, क्योंकि हमने स्टेट डायग्राम में देखा कि जो काउंटर रन होगा वो 0 to 1 1 to 2 एंड 2 से अगेन रीसेट हो जाएगा। तो ये 0 1 2 आर द वैलिड स्टेट एंड जो थर्ड वन जो है 1 1, सो दैट इज़ अ इनवैलिड स्टेट। सो वेन एवर दिस स्टेट्स ऑकर काउंटर विल बी क्लियर, ठीक है, रीसेट। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक रीसेट सर्किट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही थर्ड स्टेट आएगा 1 1, ये वापस से क्या हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा 0 पे, लाइक दैट। सो 0 1 2 आर द वैलिड स्टेट्स फॉर दिस काउंटर एंड 3 विल बी द इनवैलिड स्टेट, सो दैट इज द ट्रुथ टेबल। देन विल सी द डिज़ाइन। तो यहाँ पे अगर हम आउटपुट को के मैप में पुटअप करके अगर उसका बुलियन इक्वेशन निकालेंगे तो वो आएगा y इज इक्वल टू ए बी बार, ओके। सो हियर एंड गेट इज यूज बिकॉज देर इज़ अ मल्टीप्लीकेशन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो ये आउटपुट हमने सिंपली ट्रांसफ़र किया है 2 वेरिएबल के मैप में, क्योंकि 2 आउटपुट्स है, ठीक है, या इनपुट ए एंड बी, ओके। सो इन 2 वेरिएबल के मैप वी पुट द आउटपुट y and we solve the by grouping, so we get the boolean equation y is equal to ab bar। so this is the reset circuit, ठीक है। तो ये reset circuit यूज़ होगा जब भी काउंटर आपका 0 1 2 पे आएगा तो 2 से वो अगेन यहाँ पे रीसेट हो जाएगा 0 0 पे, ठीक है, बिकॉज दिस इज द इनवैलिड स्टेट 1 1। अभी हम उसको डिज़ाइन करेंगे। सो generally T flip flops are used and T flip flop has a one input, so the input TA is the input for A flip flop, TB is the input for the B flip flop, then clock is given to only one flip flop which is given to A. The output of first flip flop, that is A flip flop, will be work as a clock for the second flip flop and it will also take as a output of as a QA, ठीक है, एंड QB इज़ द आउटपुट ऑफ सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो रीसेट सर्किट डिज़ाइन किया है वो y इज इक्वल टू ए बी बार है, सो दैट्स वाई दिस y दैट इज़ क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्लिप फ्लॉप को रीसेट करना है जब भी ये 1 1 स्टेट पे आएगा। तो वहाँ पे हमने क्लियर में एंड गेट कनेक्ट कर दिया है जो कि हमने डिज़ाइन किया है यहाँ पे, ओके, ए बी बार। So that's why the output A QA of first flip flop is given as the one of the input to the AND gate. The output QB, which is given as the second input to this AND gate, and the output is nothing but the AB bar, which is given as a clear or reset circuit to this flip flop A, ठीक है। तो ये जो स्टेट्स आउटपुट होगा ये QA QB पे मिलेगा जो हमने ट्रुथ टेबल में देखा 0 0 0 1 1 0 लाइक दैट। एंड ये जो है ये रीसेट सर्किट है जो हमने ऑलरेडी डिज़ाइन किया है ए बी बार के लिए। तो इस तरह से ये 3 बिट मॉड 3 काउंटर डिज़ाइन होगा यहाँ पे। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम IC 7493 का डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।